Jain friends, I'm sure you all have done well in your Intelligence Bureau Phase 2 examination, the subjective paper, which has been recently concluded. I have been wanting to talk to you, but due to some commitments with the UPSC Civil Services interviews, personality programs, I have not been able to speak to you. But I thought I'll speak to you at opportune time. Now, since you have a much needed break after your mains, after your phase 2, most of you, I'm sure you've done well in your examinations. आपने अपने आंसर्स जो पेपर 2 में हैं, particularly your essay, your comprehension and your questions, you've done well. And phase 1 में भी आपने tier 1 में भी अच्छा किया होगा. Now most of the battle has been won, but अभी दिल्ली दूर है. अभी you have to do a lot more. Now comes the most important part of this examination, that is the personality test or the interview, जिसको आप सरल भाषा में interview कहते हो. So after having interviewed more than 2,000 candidates across various examinations, I have been interviewing the UPSC Civil Services candidates, and the feedback that I want to give from that, what my reading is, that interview is not a test of just knowledge. It's a test of your personality, your ability to perform in stressful situations, how you deal stress, how you deal problems. In your actual job scenarios, things will be different. तो आप उन मसलों में कैसे डील करते हो? What is your reaction to these crisis situations? What will be revealed in the interview. So for the interview, many of you had been requesting me कि sir, do you have a program for interview? So I'll tell you what, for interview I will be having one-on-one sessions with all of you. So there will be no program as such, because I feel interview is a very unique program, a very unique thing, and one strategy will not fix for someone else. So rather than dealing as a group, I would rather deal in small groups, or probably one-on-one will be the best way. So those of you who want to start your preparation early, I would suggest you should start reading newspapers. First thing, read about your DAF, your detailed application form, whatever you will be asked to fill, like in civil services it is said. तो उसमें आपने कोशिश करनी है अपना ग्रेजुएशन के बारे में, अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अपना अगर कोई पहले जॉब की है उसके बारे में पढ़ लीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन वेरियस अदर थिंग्स. यू मस्ट फोकस ऑन योर चाइल्डहुड, प्लेस where you were born, where you have lived all your life, and cultural significance of your state, your district, your town. Also, these are the basic things about yourself, your hobbies. What are the sports you play? What are the activities that you indulge in? So these are the things that you should be well versed with, you should be thorough with. So this is about your own thing. Apart from that, whatever is happening in the current affairs, internationally, nationally, various schemes, all of that, तो वो आपको एकदम thorough होना है. See, knowledge is one part. Knowledge is not the end of the interview. Knowledge is the beginning. But because without knowledge, how will we converse? अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है, आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, आप वेल राउंडेड नहीं है, तो हम बात डिस्कशन कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें यही है, सबसे पहले तो नॉलेज एक्वायर कीजिए और अपनी पर्सनालिटी पर वर्क कीजिए. अक्सर बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर इंटरव्यू किस भाषा में होगा? तो प्रेफरेबली मैं आपको यही कहूँगा, दी प्रेफरेबल लैंग्वेज इज इंग्लिश, बिकॉज आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको काम अंग्रेजी में ही करना है, इंग्लिश में ही करना है काम आपको. बट इफ यू फील लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव सो मच डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, यू कीप वर्किंग ऑन दैट, और इंटरव्यू में आप बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं थोड़ा इंग्लिश में, मैं हिंदी में या अपनी भाषा में अगर वो केपेबल है, फॉर एग्जांपल आपकी भाषा में, वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या सर मैं इस भाषा में बात कर सकता हूँ. बट मैं सजेस्ट करूँगा कि उस हद तक ना जाएं. बेहतर है कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी को बढ़ाएं. रीड गुड लिटरेचर, मे बी वॉच यूट्यूब पे लॉट ऑफ गुड न्यूज़ चैनल्स आर देयर. यू कैन वॉच शेखर गुप्ता सर्स, प्रिंट पे वो कट द क्लटर आता है उनका. Then you can watch Palki Sharma's Vantage. So these are, I would suggest, apart from that, you can also watch international news channels. So try to build your personality. You should be physically fit. You should be mentally agile. So these are a few things I would suggest that you should focus on. Interview में walk कैसे करना है? For example, आप interview room में, boardroom में जाते हैं जब, तो you enter and you seek permission first of all. Sir, may I come in? Ma'am, may I come in? As you enter, and there will be 4 to 5 board members. So first of all, you have to wish the chairman and then nod at the other. Don't wish everyone good morning sir, good morning sir. Don't do that. Just wish the chairman and look at others also. That should be sufficient. But if there is a lady member, first wish the lady member good morning ma'am, and then to the chairman good morning sirs, and then look at others.
That is how the salutation, the greeting is to be done. After that, what you can do is, you just don't sit yourself, just stand close to the chair, and the panel will ask you to sit down, and then thank them, thank you sir, and then continue whatever they ask questions. They ask you to introduce yourself, and don't say myself. It is grammatically correct. My name is so and so, start with that. And when you leave the room, simply say thank you sir, thank you ma'am, like that, and leave. No extra thing, no extra, you don't have to be overtly getting yourself into trouble. So that is the basic thing. बाकी जो सवाल कैसे पूछे जाएंगे, उस पर हम किस तरह की टिप्पणी करनी है, हमें कैसे रिएक्ट करना है, तो वो आप धीरे धीरे जब हम बात करेंगे, वन ऑन वन सेशंस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो प्रेफरेबली दैट शुड बी द अप्रोच. ये आपका मुझे लगता है एक तरीका होना चाहिए. इस तरह से आप थोड़ा सा अपने स्ट्रैटेजी पे काम करें, पढ़ाई करें, अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, न्यूज़पेपर को बिल्कुल मत छोड़ें, ऑडियो विजुअल न्यूज़ भी सुने, जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे या आप टीवी पे. मैं न्यूज़ चैनल्स अवॉइड करने के लिए आपको बोलूँगा, डोंट वॉच न्यूज़ चैनल्स. सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पे ज़्यादा फोकस करें, और बाकी भी जो देश में हो रहा है, वेरियस स्कीम, जैसे वीपी रामजी स्कीम है, शांति बिल है, अभी डीगो गार्सिया में क्या हुआ है, ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है, वेनेजुएला, ईरान, ऑल ऑफ बांग्लादेश में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, चाइना ने शख्सगाम में क्या किया, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड बी रीडिंग अबाउट. तो अभी के लिए मेरा आपको इतना ही संदेश है कि आप अपनी तैयारी, रिजल्ट जिनको लगता है उन्होंने थोड़ा ठीक किया है, और जिन्होंने नहीं भी लगता है वो भी तैयारी करें, अपने लेवल पे करें. नो नीड टू टेक एनी कोचिंग फॉर नाउ. आप अपना तैयारी करें. जब रिजल्ट आएगा, जिनको थोड़े डाउटफुल है, वो रिजल्ट के बाद कहीं पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं. लेकिन जिनको 100% लगता है कि हमने अच्छा किया है, वो तैयारी शुरू कर सकते हैं. आपको जहाँ पे भी यू फील यू आर कंफर्टेबल टू ट्रेन, यू गेट गुड मेंटर्स, ज्वाइन देम, और मे बी डू सेल्फ स्टडी, और अपने सीनियर से किसी बात कर सकते हैं, हाँ, ताकि अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा काम करें. ठीक है. तो मेरी आपको ये सलाह होगी, इफ़ यू वांट टू हैव वन ऑन वन सेशंस विद मी, यू कैन गेट इन टच विद माय टीम. आई विल शेयर द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन में, यू विल गेट द कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर. तो वहाँ पे आप टीम को कॉन्टैक्ट करें, और वन ऑन वन सेशन. सिंस आई एम करेंटली बिजी विद यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यूज, तो अभी टाइम विल बी एट अ क्रंच. अभी यू कैन बुक योर स्लॉट्स अर्ली, सो दैट आई विल गिव योर डेट फॉर 2-3 days लेटर. तो वैसे आपको थोड़ा सा दिखना पड़ेगा. वंस द इंटरव्यूज गेट फिनिश्ड, देन मे बी वी कैन गेट मोर फ्रीक्वेंटली, हम प्लान कर सकते हैं. फॉर नाउ, रीड योर न्यूज़पेपर्स, read your subjects, read about your state, about your religion, about your hobbies, about your sports, everything about yourself, read about it, and become a well-rounded personality. और अपने आप को थोड़ा सा एक वेल बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनाइए. इंटरव्यू में डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए. आप कहते हैं ना, यू डोंट गो चेजिंग द बटरफ्लीज, you mend your garden. That's how it is done. All right. So that's all I want to say. My best wishes to all of you. Keep working hard, keep studying, and I'm sure you all will come out with flying colors. See you in the personal interviews. See you in the one-on-one sessions. And in between, if I get time, I'll keep posting some videos that may help you. Okay. All the very best. Do well. I'm sure you will do wonderful. Whatever exams you're preparing for, not just the intelligence, but other CAPF examinations, UPSC civil service examination, whatever you're doing, my suggestion would be to give your very best. So do your best. All the best. See you in the interviews.